एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो सजेस्ट की है हमें रमन आदि विष्णु ने, और वो लिखते हैं कि रिसेंटली वी हैव सीन सम व्लॉग्स बाय एन इंडियन हु हैज विजिटेड पाकिस्तान, लाहौर एंड पार्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और वो खुद भी बड़े हैरान हुए कि अभी उन्होंने कैसे पाकिस्तान विजिट कर लिया। बेसिकली उन्होंने बताया कि जो रवि प्रभु हैं वो साउथ इंडियन साइड से हैं, हैदराबाद से हैं, और 186 टोटल उन्होंने कंट्रीज विजिट किए हैं, जिनमें से 181 नंबर पर पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया था। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए ये सुनकर सारी डिटेल। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी देखें कि उनका विजिट कैसा रहा। वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, और वीडियो का टाइटल है फर्स्ट इंडियन ब्लॉगर इन गिलगित बल्तिस्तान पार्ट 1, रवि प्रभु एंड इंडियन एडवेंचर। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। The beauty of Gilgit Baltistan. Hello, namaste and adab. Welcome back to my channel. This is Ravi once again. I am extremely overwhelmed with the response I received on my vlog number 1 on Pakistan. So I'm pumped and ready for this vlog number 2, which is my detailed trip through Gilgit Baltistan. And then please do not forget to hit on the subscribe button so I can share more stories from across the world. So started this trip to the northern areas from the brand new Islamabad airport, which is really beautiful. And then taking my first ever Pakistan International Airlines flight 451 to Skardu in Gilgit Baltistan. The flight route took us over Kagan Valley and the very famous Balakot. And amazing mountain vistas just like Ladakh in India. And then flying over the stunning Karakoram ranges, and we could even spot Nanga Parbat on the left hand side. And then the first side of river Indus, and then landing into Skardu. The setting is absolutely brilliant. That's the Pakistan International Airlines that we took. And check this landscape out, guys. Just too good. With the Pakistani Ranger. Pakistani Ranger. How do you feel now? Amazing, man. I'm pumped. A quick compulsory foreign registration. ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशली रवि जो इंडिया से आए हैं। Right, this is River Indus, the source, the origin of Indus Valley civilization, the lifeline of Pakistan now, and the name India comes from Sindhu, the Sanskrit word. And the next stop was to explore the Katpana coal desert, one of the highest deserts in the world at 7,300 meters. And this extends all the way to Nubra in Ladakh region of India. In the Shigar coal desert. Check this out, guys. I am walking on coal desert. Wow. Take this absolutely beautiful wilderness. These are the sand dunes of the coal desert. Cannot get any better than this. Absolutely loved it. And witnessed a stunning sunset. We spent that evening exploring the 17th century Shigar Fort, which has been converted into a new Serena hotel. Unfortunately, I lost that footage, so I won't be able to share it.
What happened, Ravi? I fell down. I hit a big stone and fell down, man. No. Ow. This way, that way. Alright guys, we are in the wilderness of Skardu. So we are between the Himalayan ranges and the opposite side is the Karakoram range. And the Indus River flows through both the ranges. This is nothing but pure heaven. And I'm not exaggerating. I've seen mountain ranges all across the world. This is extra special. The reason being, this is in Pakistan. As an Indian guy, Pakistan always is special for us to visit. And the second important thing is, this area controlled by Pakistan has about 15 or 17 peaks. 17 tallest peaks in the world, which is not a small deal. It is a very, very big deal. This place called Shangri-La is very, very famous because of the lake and the setting. So in the beautiful Shangri-La resort surrounding the lower Kachura lake. That's quite a beautiful view. Loved it. And the next visit was to the Mantal Buddha Rock in Shigar. So Ladakh is very similar to Gilgit Baltistan because it was all together once. And then I was telling friends that Ladakh is similar terrain, but a lot of Buddhist monasteries and Buddhist art. So they're taking me to this Buddha Rock. Let's see what's there. Buddha Rock. And it was a steep hike to get to the Buddha Rock. Entered the place and the first sight was just wow. At the Mantal Buddha Rock. So in Gilgit Baltistan also, like Ladakh, you have some Buddhist scenery. Check this out. And then up and close to the Buddha Rock. It reminds me of the Burmese scenery. The Burmese Buddha was big and the Taliban blew it, I understand. But somehow this gives me the feeling that I'm there. And check this out. So many Buddhas carved in this huge rock, and then a giant Buddha out here. Amazing to see so many Buddhas in Pakistan. I don't know, I'm feeling really, really good about it. Look at the big one. The next hop was to the Mantoka waterfall. ये लद्दाख टाइप में लग रहा है ना? अच्छा, कारगिल रोड। शायद भी कारगिल रोड ना, वहाँ से आगे रास्ता जाता होगा ना? ओके। वाओ। कितना साफ पानी है यार। वाह। वाकई बहुत साफ पानी है। In the wilderness of Gilgit Baltistan, pure bliss, sublime setting, no pollution. So some fresh trout right from here. Hot tea. That's the local Baltistan bread. Azo. Lots of photo requests from people in the area because they've never seen an Indian come to this particular region. कोई नागरिक यहाँ पे यात्रा करे बहुत मजा आ गया. Yeah. Thank you. Feels very good to be in Pakistan. And from an Indian side, I mean बहुत आनंद हुआ है मुझे भी पाकिस्तान देख के इतनी खूबसूरत है. बहुत बढ़िया. Yeah. Thank you, sir. अच्छा, he's trying Yet to another speak Hindi, phenomenal day discovering various sites of Skardu area and back to Skardu on the Kargil road. कितने ऊपर बादल और पहाड़ भी कितना खूबसूरत था एक. इसलिए तो कहे लद्दाख टाइप लग रहे हैं. And some relaxing, beautiful moments, listening to chirping birds, playing kids, and witnessing yet another beautiful sunset. And then off to the Diosai Plateau, which is the second highest plateau in the world. सब पहाड़ और हम लोग बताबाद झील गए थे. पानी में तो Little town. See that burst of greenery in between the mountains?
looks really beautiful. And some rough terrain, and hence a slow drive to the entrance to the DOSI National Park. And then the DOSI National Park entrance and another set of registration. We couldn't drive faster than maybe 10 kilometers an hour because of the very rough terrain, and the drive was very slow as it started to get dark. It was rather slow but quite thrilling to drive on that rough terrain with all the twists and turns and through the mountains. The scenery was fantastic and really loved every second of the drive. What gets better than this? I've seen similar things in Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and maybe India. But this is really, really outstanding. What an experience. Beautiful time on the DOSI plateau. The water, landscapes, the sun diffusing the light of those mountains, everything to perfection. So we're having green herbal tea in the plains of DOSI with the police and rangers. Just had a beautiful time in the lap of nature, interacting with the rangers and police on the DOSI plateau, which is the second highest plateau in the world, and caught yet another beautiful dusk and sunset. And then a few hours to Astore to spend the night. This Yosar Lake in the middle of the DOSI plains. The road was very bad, so it got dark, but this gives you another perspective of the beauty of the DOSI plains. Nasrallah Bhai was kind enough to drive us all the way to Astore while each one of us was exhausted and fell asleep. This is the end of part 1. Please stay tuned for part 2 to see more of my experiences through Gilgit Baltistan. थैंक यू। बात करें अगर आज की वीडियो की तो रवि प्रभु जी जो हैं वो जिन जिन एरियाज में गए आज तक मैं भी नहीं गया लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की भी है कि मतलब वो उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है इतने क्रिटिकल टाइम में भी, और लोग जो उनसे वो इतने अच्छे तरीके से मिले हैं एक दूसरे के साथ। इवन मतलब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि लोग हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए, जैसे उन्होंने वीडियो में कहा हाँ कि हमेशा मतलब इंडियन होने के नाते पाकिस्तान हमारे लिए बहुत स्पेशल रहा है, तो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए भी इंडियंस बहुत ज्यादा स्पेशल। बिल्कुल, जैसे क्या नाम लेते वो यहाँ पे आए हैं घूम के गए ना, ऐसे बहुत सारे करोड़ों के हिसाब में लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात बोलूंगी नो डाउट उनकी जर्नी जो उनसी है वो बहुत मजे की रही होगी, उनको मजा भी आया होगा, बट कहीं ना कहीं पर एक चीज चाहे इंडियन पाकिस्तान विजिट करें और पाकिस्तान इंडियन विजिट करें, एक चीज तो उनके जहन में जरूर आएगी कि ये एक टाइम पर एक ही कंट्री था और यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं था और हम सब जब चाहे एक दूसरे के साथ मिल सकते थे। बट खैर अभी भी मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं हम लोग बहुत खुश होकर मिलते हैं, चाहे बाकी जो लोग हैं वो जो मर्जी कहते रहे, बट ऑनेस्टली मुझे इसे देखकर बहुत वैसे मुझे भी लगता है कि उन्होंने जितने भी अपने ट्रिप्स किए होंगे ना उनमें से सबसे यादगार उनका ट्रिप ये वाला रहा होगा। सबसे मजे की बात इस ट्रिप में उनके लिए ये रही होगी कि लैंग्वेज जो इंडिया और पाकिस्तान में बोली जाती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। फिर यहाँ पे लोग जिस तरह से मिलते हैं या वहाँ पे जब पाकिस्तानी जाते हैं तो जिस तरह से वो लोग मिलते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना एक वार्म वेलकमिंग का, ये जो है आपके जो घूमने फिरने का, आपके आने का, आपके रहने का, ये सब बहुत इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है। और मौजम वैसे सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो ब्लॉगर थे जो रवि वो तो साउथ साइड के थे, मुझे लगता है उनकी इंग्लिश
इंग्लिश अच्छी ज्यादा होगी, नो डाउट, लेकिन हिंदी उन्हें समझ तो आ रही थी ना। अगर हम बात करें तो वाकई में ये लैंग्वेज एक होने की वजह से ये काफी ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से वो घूम रहे थे और वो भी बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख जो सा है वो एक जैसा लगता है, तो मतलब ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं। हमने असल में एक वीडियो भी देखी थी जिसमें रोड ट्रिप था लद्दाख तक का, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो वहां भी पहाड़ इसी तरह के थे। और मुझे सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी, नेगेटिविटी हम ढूंढने में आएंगे ना तो हमें बेशुमार नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो बहुत कम लोग निकालते हैं। तो मुझे हमेशा यही चीजें पसंद हैं और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन सब लोगों को जो कि आगे आते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों के बीच में दूरियां कम हो, इख्तिलाफात कम हो। और रवि प्रभु जी मैं कहूंगी एक एग्जाम्पल है, उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट की कि इतने क्रिटिकल टाइम में, जबकि हम लोग भी सोचते हैं हमें वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग कहते हैं हम लोगों ने भी जाना बट हमें वीजा नहीं मिला, बट इनको देखकर थोड़ी सी होप हुई। बट आई थिंक मौसम मुझे लगता है कि मे बी ये पहले आए कंट्री में नहीं पहले नहीं, अभी रिसेंटली आए हैं। यही तो हैरानगी की बात है जो ईमेल में भी बताया ना। जो थोड़ा सा हमने इनके बारे में पढ़ा वो ये कि वो बेसिकली यूएसए में रहते हैं, तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो पाकिस्तान अभी आ चुके हैं। अदरवाइज आई थिंक इंडिया में होते तो शायद अभी मुश्किल होता है ना। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि सबको मालूम है इसमें वीजा जो है हासिल करना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर अभी मिल रहा था तो फिर हम भी चले गए होते ना। सही बात है। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर पाकिस्तान को एक इंडियन की नजर से कि उन्होंने अपने कैमरे में जिस तरीके से कैप्चर किया और हमें हमारी कंट्री की, मतलब हमारे कंट्री की, हम दोनों के, मैं बोलूंगी क्योंकि एक टाइम पर ये हम सबका एक ही कंट्री रहा हुआ है, तो उसकी खूबसूरती दिखाई तो बहुत अच्छा लगा। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे हमारे वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।